So go straight to the point. We will be learning three items. One is known as bar graph, where I'll spend very less time. You already know what is a bar graph. Then you will study something called a histogram. Okay. And you will also study something called a frequency polygon, which is actually a takeaway of histogram. Before starting all these things, let us try to understand few basic concepts. Like say, suppose I go to a class and that class has got 40 children and I ask those 40 children, they have appeared in one examination or a test and 40 children have scored, I'll have 40 marks. Not 40 different marks, but 40 marks. Like 2 children might have scored 20, 2 children might have. So I go in with a copy in my hand and I ask, how much did you score? How much did you score? How much did you score? So how many entries I'll have? 40 entries. Because there are 40 children and all were present in that test. That means that is called raw data. वो जो data मैं लेके आया ना, that data we will call as raw data. And raw data should be very sincerely captured, not making any goli. But the raw data, suppose that was one section of grade 9 and in your school there are 8 sections of each grade. In each section there are, sir, yes, is it okay now? Yeah. So there are 40 children in each section and there are 8 sections. So I have all the 40 marks with me, and suppose if I'm a principal or if I'm a parent, if you spread up all those 40 marks and present to me, hey, sir, 2 hai, koi score hai 48, that doesn't make any sensible information to me. So one way to represent that is I start doing something which is known as, let me make something called class intervals. Okay, class intervals. And in class intervals, what I do, I divide them like that, like 0 to 5 marks. How many children scored from 0 to 5, right? Similarly, I say 5 to 10 and 10 to 15, 15 to 20, and say 20 to 25, and say, so it was a 25 marks test, and I have written 25 to 30. Full marks was 25. This is the distribution. So now question comes, sir, a child scored 5 in that test. उसको कहाँ पे बिठाए? ऊपर बिठाए कि नीचे बिठाए? 5 तो 2 है. इसको हम कहते हैं बेटा क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल में ये दो चीजों को देखिए. इसको हम कहते हैं यूसीएल, इसको हम कहते हैं एलसीएल. लोअर क्लास लिमिट, हायर अपर क्लास लिमिट. ये सब क्लियर हो जाइए, then your grade 10 will be very easy. You have a upper class limit and you have a lower class limit. Have you understood? Okay. In any form of distribution, say this is my first class, okay, then this is my second class. Second class means these are classes. Okay, I will again have one LCL and I'll have a UCL. If you find that the UCL of the lower class is equal to the LCL of the succeeding class, or UCL, which is right now happening here, 5 और 5 बराबर हैं, 10 और 10 बराबर है ना? ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं continuous distribution. Continuous distribution. And when you will be making histogram, जब आप histogram बनाएंगे, in histogram your distribution has to be continuous. ये याद रखिए, continuous distribution कहते हैं. ठीक है, तो समझ में आया? सबसे पहले क्लास मार्क, सॉरी क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल किसे कहते हैं? अब ये डेटा थोड़ा इजी हो गया रीड करने में. 0 से 5 कितने बच्चे थे? 5 to 10 कितने बच्चे ने स्कोर किया? राइट, 10 to 15. Have you understood this? In every class you will have a lower class limit, you will have a upper class limit, right? If the upper class limit of a class is same as the lower class limit of the succeeding class and the pattern continues, this is known as a continuous distribution. In continuous distribution, now it is interesting. थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपको कुछ हाई लेवल लग रहा है. Suppose there is a data x, there is a data x. जैसे मैंने आपको पूछा 5 को कहाँ बिठाओगे, तो मान लो 5 नहीं, कोई भी एक डेटा x है. X is a data which will always be greater than equal to the LCL of the class, but will be less than the UCL of the class. समझने में आपको लग रहा है बहुत हाई एंड कुछ बता दिया. देसी भाषा में ये बता रहा हूं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में
अपर क्लास लिमिट्स कंसीडर नहीं होते हैं। जैसे आपको 5 प्लॉट करना है ना, तो यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। x is a data, x is 5, x should be less than or equal to LCL, yes, less than or sorry, greater than or equal to LCL, which it is, but should be less than the UCL. 5 has to be less than this. तो यहां बैठने से देखो सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ व्हाट इज योर मार्क्स? 5, 5 is equal to 5, valid, 5 is less than 10, valid। ये समझ में आया? In a continuous class, so why I am stressing on continuous, because in grade 9 whenever you will be making histogram, the first thing is the class interval should be continuous। इसका मतलब the first injustice that will be done to you is that the class interval will not be given continuous। तो हमको इसको कंटिन्यूअस करना होगा, वो बाद में सीखेंगे। ये चीज समझ में आया? नाउ टेल मी वन थिंग, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल मीन्स whatever data you took, those data are presented here as grouped data। मतलब I took the marks of 40 children of this class and then I grouped it। I grouped it how? 0 to 5, 5 to 10। easy होता है एनालिसिस में। समझ में आया? अब ये 0 to 5, 5 to 10 वाले जो बच्चे हैं ना, यहाँ पे मैं यूजुअली लिखूंगा समथिंग कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस हाउ मेनी सच बच्चास, हाउ मेनी सच बच्चास। डोंट यू थिंक इफ आई ऐड द फ्रीक्वेंसी इट शुड बी इक्वल टू 40, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज द मार्क्स ऑफ 40 चिल्ड्रन। यहाँ 5 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 1 बच्चा, जो भी है ऐड करने से 40 होना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, so LCL, UCL you have understood. Now there is one more thing, it still doesn't tell me the marks, it doesn't tell me marks, it tells me range of marks. Suppose I plot here 8, what is the information you are getting? There were 8 kids who scored from a mark equal to 0 to equal to 4. Do you have the individual information of the 8 kids? No, we don't have। उन 8 किड्स का मार्क्स क्या है वो नहीं पता हमें, बस हमें ये पता है 8 बच्चों ने। सो ऑब्वियसली एज अ प्रिंसिपल यू में से कितना फालतू क्लास है, देखो 8 बच्चा 5 ये स्लैब में है। इफ यू आर अ गुड क्लास, मोर चिल्ड्रन शुड बी हियर। बट हियर आल्सो वन मोर स्टोरी, ऐसे सुन लीजिए। दुनिया की कोई भी स्टैटिस्टिक्स आप करो हायर एंड, एवरीथिंग फिट्स इनटू समथिंग कॉल्ड द बेल कर्व। इफ दिस इज पुअर and if this is rich, means these are children who didn't perform well, children who perform well, दोनों ही कम होंगे, मिडिल में हमेशा ज्यादा आता है। anything, any data where you are serving more than 50, do you like noodles, do you like noodles, do you don't like noodles, so आप देखना so वाले ज्यादा आएंगे, like वाले कम होंगे, dislike वाले। any distribution in this world, this is called normal distribution। anything, if you see marks, very few children will score less, very few children will score good, majority will always be। this is called a bell curve। इसको बेल कर्व में फिट करते हैं, ये बेल जैसा होता है ना। चलो वो छोड़ो, ये समझ में आया? now we still need an arbitrary marks to be assigned to it, we still need a mark। so when the distribution is of this order, whatever statistics you do, you will not get a very good number, because the marks that we get for this particular thing is the midpoint of this class। we try to find out the midpoint, ठीक है? और वो midpoint जो होता है, that midpoint, we have a name for it, we call it the class mark। class mark, and the class mark is given by LCL plus UCL divided by 2, and it's very easy, LCL plus UCL divided by 2। so if you see the class mark for this, it will come how much? 2.5। You did not calculate with this। यहां पे गैप कितना है? गैप कितना है? 5, इसे 5 जोड़ दे, 7.5। करके भी देख लो, 5 plus 10 15, 15 को 2 से डिवाइड करो, 7.5। इस पे फिर 5 जोड़ दो, 12.5। करके देख लो, 25 डिवाइडेड बाई 2 is 12। इस पे फिर 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 17.5, 22.5, और ये कितना हो गया? 27.5। अब ये क्या कह रहा है? अब ये स्टडी कह रहा है 8 बच्चों को एवरेज औसतन 2.5 मिला, जो कि ये भी करेक्ट नहीं है। हो सकता है 8 बच्चों में 5 बच्चे लड्डू ही लाए हैं और 3 बच्चे 4 मार्क्स लाए हैं। बट समवेयर वी हैव टू
स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज अ डिपस्टिक गेज, एक्यूरेट जितना आप करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा, इसलिए डेटा कैसा आया उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज वी आस्क्ड हर, go to the bus stop in the morning and meet children and ask their ages, and the month is June, and I asked her to do this exercise in the afternoon. इसने डेटा लाया, इसके लाए हुए डेटा में हमको दिखने में आ रहा है खूब 6-year-old बच्चे हैं, तभी आप समझ लो इसने गोली मारा है। कैसा गोली? इट वॉज हॉट समर, so she went and sat under the sun shade, that is a tree. The bus which parked beside the tree was the toddler bus, and whoever was getting down, she was asking her age. You mean to say there was no grade 9, no grade 10, no grade 11, no grade 12? So data itself came wrong. अब उसका अगर आप statistics करोगे तो आपको क्या दे रहे हैं? GIGO, garbage in will give you garbage out. The more better raw material you take, the more better results you'll get. So did you understand what is midpoint or called the class mark? इतना हो गया, जरा स्लाइड को चेंज करता हूं तो कुछ चीजें लिखता हूं। By now of this discussion, do you understand what is group data? Group data means you will always have something called class interval. If you have class interval, you will have a LCL and you will have a UCL. In such a case, you can also give birth to something which is known as class mark, which is equal to LCL plus UCL divided by 2. ये भी आप कर सकते हैं। And if the UCL exactly tallies with the LCL of the next class, then such a distribution is known as continuous. And if the distribution is continuous and we need to plot a data, just keep ensured that it should be less than the upper class limit and greater than equal to the lower class limit of a particular class interval. इतना आपको ध्यान रखना है। Clear? Any बच्चा, any doubt till here? No. Very good. अभी को बात करते हैं। Suppose group data is not there, data is given to you, raw data is given to you. Raw data means you actually brought 40 individual marks of 40 children and you have not grouped them. In that, don't you think there will be some minimum mark? Let's understand there is a child who scored a 0. And there should be a maximum mark also. Let us understand some child scored 24, 25 किसी को मिला नहीं. Then, इसका जो difference है ना, इसको हम बोलते हैं range. Range. Range is always given as the max minus the mean of the data. 8-year-old बच्चे के लिए गिफ्ट दिखाइए। The next thing the shopkeeper tells, मैडम रेंज क्या है आपका? 350 से 400 के बीच में दिखाइए। मतलब मैं सबसे कम 350 देने को राजी हूँ, सबसे ज्यादा 450. So that's called my range. My range is how much? 100. Now ask yourself some queries. Suppose in a class test you find that the range is very big. That means the class has performed bizarre. Range is big का मतलब समझ रहे हो? मैक्सिमम मार्क्स आया है उस क्लास में, मिनिमम भी आया है, इसीलिए रेंज बड़ा हुआ है। अगर रेंज छोटा है तो ओवरऑल क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस एक जैसा है। ऑल चिल्ड्रन स्कोर्ड बिटवीन 5 and 7 marks. What is the range? 2. All children scored between 25 and 23. What is the range? 2. Range does not tell us whether the class performance was good or not, but smaller the range, more uniform is the scoring pattern. है ना? हमने इस दिवाली में घर के जॉइंट फैमिली के सारे बच्चों को 10 रुपए रेंज में गिफ्ट्स बांटे हैं। मींस इफ शी हैज गॉट a 40 rupee gift, she can get either a 50 rupee gift or a 30 rupee, not beyond that. If you are doing beyond that, then फिर झगड़ा हो जाएगा दोनों बहनों में। समझ में आया? इज रेंज क्लियर? चलिए अब आते हैं अगला चीज, डिसकंटिन्यूअस इंटरवल को देखते हैं थोड़ा सा। मान लो 1 to 4, 5 to say 9, 10 to 14, 15 to 19, ऐसा रेंज देखते हैं। 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रहा है, बट इट इज वेरी इजी। नाउ इफ आई आस्क यू प्लॉट द स्कोर 4, सर इजी में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि 4 इसमें है नहीं, तो यहाँ बड़ा इजी हो जाता है। इफ x is a data,
x is greater than equal to the LCL and also less than equal to the UCL. इसमें कोई टेंशन नहीं है, समझ में आया? बट इशू है जब आपको इसको, ये कैसा डेटा है, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आवर चैप्टर इज ऑल अबाउट हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम में डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है? डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस करने से पहले क्या करेंगे, इस बच्चे को बोलेंगे थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट करो, इसको बोलेंगे थोड़ा राइट शिफ्ट करो, बस सिंपल हो जाएगा। सो व्हाट यू डू, you take the upper class limit of the previous class and take the lower class limit of the next class, next, and this is previous. Have you understood? Any two classes, any two successive classes. जैसे इन दोनों में देखते हैं, हमारी वैल्यू क्या हो गया, 5 minus 4. 5 minus 4 is how much बेटा, 1. 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, जस्ट डिवाइडेड बाय 2, हाउ मच यू गेट, 0.5. इसको 0.5 स्ट्रेच करो, इसको 0.5 स्ट्रेच करो। इसको अगर हम 0.5 स्ट्रेच करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, यहां भी 0.5 स्ट्रेच होगा, हाँ पीछे जाएगा 0.5, और ये कितना बन जाएगा 4.5। अभी ये कितना बन जाएगा 4.5, ये कितना बन जाएगा 9.5, 9.5 टू 14.5, 14.5 टू 19.5। देखो तो कंटिन्यूअस हो गया ना अभी, ये आपको करना आना चाहिए। इफ यू गेट अ डिसकंटिन्यूअस ट्रेंड देन यू शुड फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू कंटिन्यूअस। हाउ टू कन्वर्ट इट, कोई भी दोस्त उठाओ, इन दोनों के बीच का गैप को देखो और उसको 2 से डिवाइड करो। अरे इसका बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल था, जैसे मान लो टी शर्ट ले लो, टी शर्ट, वो टी शर्ट कैसा है, हंसना मत, हाँ तो मजेदार एग्जांपल है। ये आपका टी शर्ट है, मान लीजिए टी शर्ट, टी शर्ट कहाँ पे स्टिच होता है, यहाँ पे स्टिच होता है ना। अब आप थोड़े से खाते पीते घर के बच्चे हो, थोड़ा मोटू हो गए हो, आपको टी शर्ट को बड़ा करना है, तो आप कैसे बड़ा करोगे, एक साइड में खोलोगे तो सिर्फ पेट बड़ा होगा, पीठ बड़ा नहीं होगा, तो आपको यहाँ भी छोड़ना पड़ेगा, वहां भी छोड़ना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक दैट टू मेक इट कंटिन्यूअस। हाँ बोलिए। जैसे अगर बहुत ही ज्यादा गैप, बहुत ही ज्यादा गैप पहले तो देगा नहीं, देने से भी वही करना है, फिर तो some datas will go unplotted रे भाई। just imagine your question 1 to 4 है, next data is from say 9 to something, तो बीच के बच्चे कहाँ पे आएंगे, ऐसा कोई करता नहीं है ना। we will try to be, see we are doing a survey, in this survey we will try to be as inclusive. Imagine you have been asked to conduct a painting competition of all toddlers in your housing society. How will you do? 3 years to 5 years one group. You'll make it as small as possible so that there is parity. Then 5 years and above to 7 years one group, है ना, ताकि इंटेलेक्ट सेम। अभी आप ऐसा थोड़ी बोलोगे 3 year to 5 year, फिर आपका 8 years to 10 years, 6-7 के माँ लोग ना फ्राइंग पैन लेके तुम्हें पीटेंगे। हमारे बच्चों ने क्या गलती किया, वो लोग ड्राइंग कंपटीशन में नहीं आएंगे क्या? आप बात समझ रहे हो? तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। बट इन गुड दैट यू आर आस्किंग दैट क्वेश्चन। ये हमेशा छोटा ही रहता है, इसमें 0.5 क्या करोगे। देखो अपना टी शर्ट में ना, अभी आप बोल रहे हो सर ये मेरा बचपन का टी शर्ट है, इसको मेरा टीनेज का टी शर्ट बना दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। पैंट शर्ट खुलता है तो कितना खुलेगा, थोड़ा ही तो खुलेगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ यू वांट टू लूजन द वेस्ट ऑफ योर ट्राउजर, you can't fit another person in that trouser. It will open some 2 inches or 1 inches, nothing more, not more than that. तो वैसे ही इसको खोलेंगे तो थोड़ा खुलेगा। ऐसा आप तो बोल रहे हो सर इसमें एक और घुसा दो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, अच्छा एक और टर्म सीखेंगे अभी, वो टर्म कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप ग्रेड 8 से सीखते आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मींस हाउ मेनी टाइम्स डज अ डेटा अपीयर, हाउ मेनी टाइम्स डज अ डेटा अपीयर। तो चलो हमारे सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं। 0 से 5 मार्क्स वाले बच्चे, 5 से 10 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स वाले बच्चे, मैक्सिमम मार्क्स वाज 15, therefore I have taken 15 to 20. Just imagine max marks was 15. If a child has scored 15 out of 15, मैं उसको यहाँ नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में अपर क्लास लिमिट इंक्लूड नहीं होता है, तो उसको इसलिए ये स्लैब लिया। अब 0 से 5 के बीच में हमारे पास थे 3 बच्चे,
ग्रेड 8 में आप इन 3 बच्चों को ऐसे लिखते थे, जिसको बोला जाता था टैली मार्क्स। बहुत अच्छी बात है। यहां हमें मिले 4 बच्चे, ठीक है, जैसे 4 बच्चे। यहां हमें सबसे ज्यादा शैतान बच्चे मिले, 9 बच्चे। और यहां हमें मिले फिर से 3 बच्चे, ठीक है। अब ये कितने हो गए? 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 9 19. That means how many kids appeared in that test? 19 kids appeared in that test. This should also be 19. 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 9 19. ये भी मैच कर रहा है। समझ में आया? इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। What does this say? How many times does a data keep on appearing? 0 to 5 में हमें 3 चिल्ड्रन मिले, ठीक है। अब हम एक और डेटा देखेंगे इस क्लास से, इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? आपने अपनी गाड़ी चलाई, आपके गाड़ी के ऊपर ट्रैफिक चालान है पिछले साल का। आज आपको फिर से ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। द मोमेंट ही इज ट्राइंग टू फाइन यू, ही सीज दैट तुम तो पुराने पापी हो, तुम्हारा तो पहले का ही है। तो अभी जो चालान निकलेगा उसमें क्यूमुलेटिव चालान होके आएगा। पुराना चालान plus any fines due to late payment plus this cumulative frequency. What we do, the first line of cumulative frequency remains the same as 3. ये वाला जो है ना, अब इस चीज के साथ ऐड हो जाएगा। 4 will get add with this, will get how much? 7. 7 के साथ 9 ऐड हो जाएगा क्यूमुलेटिव। इससे पहले के सारे फ्रीक्वेंसीज ऐड होते जाएंगे। 3 के ऊपर कितने फ्रीक्वेंसी है? नो फ्रीक्वेंसी, ओनली 3। 4 के ऊपर कितने फ्रीक्वेंसी है? 3। तो 4 पे 3 ऐड हो गया, आ गया 7 cumulative. At this level, what is the cumulative frequency? Well, that will help us to draw the histogram. Because when you, the point of this, you will understand when you go to grade 10 and you actually do median calculation, because you now right now don't know how to calculate median for a group data. So once you understand median, then you will understand why we do this. Okay, 9 के ऊपर कितना तक आ चुका है? 9 + 7 16. 16 and then we have got 3 and 16 makes it, in cumulative frequency the last will always tally with the total. होना ही पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है तो आपने कोई गड़बड़ी किया है। समझ में आया? this is very helpful when we do median. आप 10 में जाओगे तो आपको समझ में आएगा क्यों आप cumulative frequency करते हो। अच्छा, इतना समझ में आया? Right. So when we are drawing a histogram, I'll go by the histogram first. A histogram is a plot between this and this, as simple as that. A histogram is always a plot between cumulative frequency and class mark, this class interval. अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है। Let's first put our little bit knowledge on, say, something called what do you say, bar graphs. Okay, let's talk about bar graphs. What are bar graphs? Bar graphs can be horizontal also, and bar graphs can be horizontal or can be vertical, right? In bar graphs, what do? We generally represent two quantities and we represent them as rectangles. Length of the bar actually tells me what is the frequency. So let's say I have a data called 0 to 5. So 0 to 5 we have got 3. बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया 3 के लिए. So if I make a bar graph, so 0 to 5, ये मेरा 3, ये 3 पे जाके दिखा रहा है. Similarly we can have this. Difference between bar graph and histogram is, in bar graph the graphs need not be wall to wall touched. There can be a gap between the two. But in histogram the gap is absolutely not allowed. कोई भी histogram आप देखो वहां पे कभी भी gap नहीं रहेगा. There won't be any gap. बार ग्राफ में आपको ग्राफ्स में गैप आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी. Have you understood? Histogram में गैप क्यों नहीं होता है? Now you will answer. That is why it is made continuous. Continuous, see, why that gap is not there in histogram? You should ask, sir, why are you taking what is called continuous distribution? Say this is 0, this is 5, 10, 15, 20, 25, and say this is 30.
right? I said histogram is a plot between the class interval and cumulative frequency. So पहला वाला cumulative frequency कितना है 3. So somewhere here the plot will happen 0 to 5. Next plot is what? 5 to 10. How many? 7. 7 is double of 3. देखो next वाला plot यहाँ पे आएगा. ये body to body touch करके जाएगा. Histogram is always body to body touched. Bar graph can have a gap between them. That's the only thing you need to remember. आपने फ्रीक्वेंसी के साथ किया है, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ भी कर सकते हो. इट इज नथिंग दैट द हिस्टोग्राम हैज टू बी ड्रॉन ओनली विद फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव. Keep one thing in mind whenever you are drawing a frequency, what you call a histogram. In a histogram or a frequency polygon, that should be continuous. Then only it will be body to body touch. Number one. आपको फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करने बोल रहा है, कहीं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ भी प्लॉट करने बोलेगा. देखेंगे आपके बुक में है नहीं है, दैट्स डिफरेंट. आई एम फर्स्ट टीचिंग इट व्हाटएवर इज इन माय माइंड, एंड इफ देयर इज समथिंग मोर वी कैन आल्सो कॉपी विद दैट. ठीक है, ये हो गया. फिर आपने यहाँ पे दूसरा वाला लिया, यहाँ पे दूसरा वाला आया, ऐसा. हिस्टोग्राम्स विल ऑलवेज लुक लाइक दिस. Understood? Once you have plotted your histogram, plotting the what you call the frequency polygon is very easy. Frequency polygon is you find out the class mark, the midpoint, the midpoint, the midpoint, the midpoint, the midpoint, the midpoint, right? And you join all of them with a dotted line, okay? With a dotted line. Now here there is something that I want to share with you. What does the frequency polygon tell you? It tells me that the overall distribution of marks and frequencies within this polygon itself. Now question comes, what about the endpoints? What about the endpoints? Okay, point. Now there is a catch. Now here I will say what your school has thought you do with that, but ideally how it should be. What are we now doing frequency polygon for? What? Marks in a test. What is the maximum marks? 25. In our case, the maximum marks was 15. Right? 15 was our maximum. Or say 25 is our maximum mark. I find, and many foreign books will say, it idiotic to extend the frequency distribution till midpoint of here, because the class was evaluated on a total mark of how much? 25. Your frequency polygon should not go beyond 25. If in your school they are doing it, please follow it. Similarly, what you will do here, you will extend it to what? Minus 0.5. Tell me, can any बच्चा score minus 0.5? No. तो ये भी बेवकूफी है, कोई मतलब नहीं होता है. However, if this was a temperature's frequency polygon, then coming on this side makes sense. Coming on that side also makes sense. But a certain amount of a statistic study where I know what is the maximum data. What is the maximum data of your science test in school? 80. तो आप 80 के बियॉन्ड कैसे जा रहे हो? बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये ह्यूमन वेट का आप हिस्टोग्राम बना रहे हो. 80 से ज्यादा मोटा भी लोग हो सकते हैं, बट 0 से नीचे लोग हो सकता है नहीं. एट दैट टाइम आई विल इंक्लूड दैट साइड, नॉट दिस. बट अगेन आई एम सेइंग, follow what your teacher has told you. Know now how to find out the frequency polygon. और ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा? This point is exactly the midpoint of this 0 to 5 by that formula. ठीक है. Now one more catch you will get. What is the next catch? The next catch which will come in your exam, they will do it that way, that your class width won't be uniform. Class width. Okay, let's look at the class width. What is class width? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. This is a continuous distribution in which the class width is 5. How do you find the class width? UCL minus LCL. इसमें कितना गैप है? 5, 5, 5, 5, 5. आपको क्या करेगा ना, कहीं पे जंबलिंग मार देगा. Rather than giving it like this, they'll give 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 30 मार देगा. ले, कर दिया सत्यानाश. Have you understood? अब आपको फ्रीक्वेंसीज का दिया रहेगा. The frequencies will be given in the question. Whatever is the frequency, 3, 5, 7, and say 4. ऐसा frequency दिया है. And as she says that in her school, you are doing a plot between this and this. आपने इसके बीच में plot बना दिया, आपको 0 मिल जाए. Because areas of the rectangles, ये सब तो rectangle ही बन रहा है ना. Look at
Look at the rectangle. A rectangle. What is the rectangle's area? The rectangle's area में कौन कौन contribute कर रहा है? The class width is contributing and the frequency is contributing. The class width has to be uniform. In which case here it will be a motu class width. Areas have to be proportional to the frequency. यहाँ पे नहीं होगा. So the length has to be now adjusted. इसकी जो length है ना उसको हमें adjust करना पड़ेगा. So here in such problems we bring something, another column. Now in your book you will say, sir, we learnt it as adjusted length. I always call it as adjusted frequency. You have to adjust the frequency. Right? So let's adjust. All of them are in 5 5. This fellow is the odd man out. Okay? So let's adjust them. So 0 to 5. If I adjust it in 5, so adjusted frequency will be 3, this will be 5, this will be 7. इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है. Have you understood? How will you adjust this frequency? Common sense. For a gap of 15, you have got how much? 4. So for a gap of 5, you should get some blah blah. You need not remember the formula. Everybody is scoring for a gap of 5. This fellow's score is for a gap of 15. For 15 gap, he's scoring how much? 4. Got it? So for 5's gap, he should score 1/3 of 4. You know how I got that 1/3? 5 is 1/3 of 15. तो इसका भी 1/3 ही लेंगे ना. अगर आप इसका 1/3 कंसिडर कर रहे हो तो इसका भी 1/3 कंसिडर करो. और यू गो बाय बुक. से आई डोंट लाइक बुक में फॉर्मूला दिया रहेगा तो आप भूल जाओगे, गलत करोगे. Your job is to make a parity. Did you understand what I said? Adjusted frequency. Here the frequency need not be adjusted, but this is a culprit. This frequency is reported for a bloated class interval. And this class interval is how much? 15. Whereas others are how much? 5 5. So either you convert everyone to 15. That is also correct. But in that you will be an idiot because you will do the labor for 3 classes. Rather you do it for the one just less. Yes or no? So you just take this. This is for 15, he is reporting 4. So for 5 he should report 4/3. अतः समझ में आया वो 4/3 कैसे हुआ? 5 is 1/3 of 15 ना? Clear? And then put that data and then draw the histogram. That will be the correct histogram. But what is the need of adjusting the? हाँ नहीं तो ये मोटू हो जाएगा ना. सब इक्वल बराबर में आएंगे. ये ऐसे आएगा. और ऐसे कैसे आ रहा है? It will, you have to adjust the length because the areas are proportional to the class width. Here the class width is not proportional. This is also bloated. This is also bloated. This is not correct representation. So we will keep this as usual. We will keep this as 15 to 30. ठीक है, तुम्हें 15 to 30 रखेंगे. तुम्हारे height को हम क्या करेंगे? Adjust करेंगे. We will not consider 4, but we will consider what? 1/3 of 4. But how will we read it? Will we read the in real life? This is it. Real life histogram is not for any data interpretation. Histogram will help you to find out median. In this class, you are only learning how to plot a histogram. You don't know any reading data. Reading data you will get from bar graphs. The question that you are asking, that bar graph will tell you in which month was the sale maximum, in which month the sale was minimum, how much more was the sale in the month of January than October. That is bar graph comparison. That's what we do in cricket. Like all the scores of the overs will be shown in bar graphs. So we will say 36th over is a huge skyscraper. मतलब खूब मारा होगा इस ओवर में. और उसके ऊपर 2 डॉट्स भी है, 2 विकेट भी गिरे थे और खूब मार भी खाया है. ठीक है. और कुछ भी ज्यादा नहीं है. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. यू हैव योर एनसीईआरटी बुक विथ यू. आज भी आप नहीं लाए हैं क्योंकि आपके ट्यूशन बैग में यू आर ऑल्सो लाइक दैट ओल्ड स्टूडेंट. वो था ना क्या, कारी, समर्थकारी. वो अपना बैग उठा के आ जाता है, आप भी उठा के आ जाते हो. ओके, इफ यू हैव योर बुक, can you just come down to the first, what is that example? I have an old book. इसमें क्या लिखा है बेटा, पढ़ो तो. ग्रोसरी वाला ना. हाँ, just look at this. This is a bar graph. ये घर का खर्चा बता रहा है आपको. What is the page number? New book 153 and figure number, figure 12.2. So this is a grocery one.
राइट। नाउ यू सी हियर, देख के लग रहा है घर में सबसे ज्यादा खर्चा किसमें आता है? हाउस रेंट एंड एजुकेशन। हाउ मच इज द खर्चा? Expenditure in 1,000 rupees means 5,000 is the kharcha on, don't read it as 5,000. And do you know kink? How many of you know the thing called kink? Kinks are plotted when you do not have immediate data. Like say for example, you have to plot datas of something like cost of cars. You can start from 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right, doesn't make it. So our car cost, the best way to represent car cost will be in gaps of say 5 lakhs each. So let's say we take an axis, and this is our 0, and we start our car from say 5 lakhs, 10 lakhs, okay. And or say we are going to more say costly segment of cars, okay, where we are our starting price of cars are 25 lakhs, 30 lakhs, 35 lakhs. Now, this is not 25 lakhs. Na? These are 5 individual. 25 plus 5, 30. But this does not represent 25. Otherwise, you have to leave 5, 10, 15, 20, 25 and start the graph from here. So what we are saying, itna ka koi use nahi hai. Just like an umbrella, you have compressed it. At that time, what do we show? We show a kink out here. Elastic jaisa hai. Buza diya usko. Sometimes kinks may be necessary for you to plot graphs, and kinks are used only when costs are very high. Okay, look at this graph. Can you tell me some data from here? Like miscellaneous and entertainments are the least. Okay. So it shows like this. A family with a monthly income of 20,000 had planned the following expenditure. Show it in a bar graph. So you have shown it in a bar graph. How to draw a graph, many times I have said, but I have not seen that cleanliness in any batch so far. So do you want, I don't feel like repeating it again because it will unnecessarily put my temper off. If I go to draw a graph, I will carry a ruler with me, a ruler which is 1 foot long, that is 12 inches. I will have one white eraser with me of whose 8 corners are unused. I'll have a 2B pencil with me and a HB pencil with me. You people will have one pencil which will be not sharp, and you will use that same pencil's head to make that graph. And some hygiene that you should actually use while making graphs are, बताता हूँ पर मतलब this children you can just ignore it, okay, because आपसे होगा नहीं क्यों? क्योंकि आप लोग करते भी नहीं हो, पर हमारे टाइम पे हम जब ग्राफ्स बनाते थे, so typically the arrows should be absolutely arrows like this. Okay, nice little arrows on this side, arrows on this side, and then say suppose this is your household items. So we write here expenditure heads. This should always be in block letter, जो आप लिखोगे नहीं. Expenditure heads. Okay. Then this is say rupees in thousands, say like this, and here also you should have an arrow which shows in this manner. Then you should also say what is your scale of the graph. These should all be block letters. So for x-axis, you don't have a scale for x-axis out here. So for x-axis you can maximum say, like the grocery example, we can say 10 centimeters or 1 centimeter. These are centigraphs, right? So these are 1 centimeters. 1 centimeter represents 1 unit. And y-axis also you can write that say 1 centimeter represents 5,000 rupees. This much is representing. That's how you plot graphs. To make your graphs more nice and beautiful, if you have time, then you can always put your bar graphs in this manner, as beautiful as you can make them. And later on, if you have time, you can also shade your graphs, make them look beautiful. ये तो सब बच्चा एक कान में घुसाने का एक कान से निकाल देने का, ये सब होगा नहीं आपसे. ये हमारे टाइम के कंप्लायंसेस थे, ये होगा नहीं. ये तो आपका एक ही पेंसिल रहेगा जो कॉम्पास में लगा रहता है, उसी से सब करोगे, वो ब्लंट रहेगा. I've been getting very strict with grade 10. Some developments are coming, but still
This is one animal. ये ऐसा ही है. You understand this, na? So I'm trying to uncurl it, but still unable to do. Like 2 times they are drawing it correctly. Third time again, I find they're same again using a blunt pencil. And looking at that scene immediately, see, what is the normal pulse beat of a human being? Normal pulse beat of a human being. That also you all don't know. How much should be the pulse beat of a human being? 72 to 80. You know what is my pulse right now? 112. Am I running? No. Hospital जाऊंगा तो सुला देगा. Today also I lost my cool on grade 8 first time. Okay, that means you must be knowing. So it's 112. So when I see those drawing, it shoots up to 120, but I try to keep calm. ये 112 अभी देखो. तो समझ में आया? ऐसे ग्राफ्स बनाते हैं. तो बार ग्राफ्स में उतना कुछ नहीं है. I'll take one example of an histogram where typically we have, ये देखो adjusted frequency case आएगा. ये adjusted frequency है. मोटू मोटू पतलू 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 पतलू. And everyone will be joining, their walls will be joined to one another. So histogram should always have continuous distribution. So let's just take one example. And here you are drawing histograms. Histogram is a plot, Ananya. It can be plotted to cumulative also. Now you don't have cumulative. What I'm saying, you are correct. You have only up till frequency. So we will try and see one histogram plot. Let's try to see a generic plot. Okay, so it says marks. And then it says frequency. This is how the question came to me. Marks and frequency. This is the question pattern. Okay. So let's see. A 0 to 20. Then we have, just pay attention here. I mean, 20 to 30. Then we have 30 to 40. 40 to 50. Then 50 to 60. 60 to 70. And then 70 to 100. Now you might think these are the marks scored by students. You might think, sir, why did the teacher make my life miserable by doing this one and this one motu? The reason might be that in 0 to 10 there was no children at all, or only one child, and 10 to 20 there was only one child. Makes more sense the way they club them. उनको club कर दिया. बात समझ में आ रहा है? यहां भी उन्होंने क्लब कर दिया. तो टीचर प्रिंसिपल को बताना चाहती है 70 to 100. Statistics is how you represent. 70 to 100, I got so many things, so many students. It shows a better performance. Just like some prices. What is the Netflix charge? $4.99. It still feels cheaper. 500 बोलने से कैसा महंगा लग जाता है. But what is the price difference? 1 rupee. This is called the catchy price. $4.99. You still don't feel that you are spending 500, but you are actually spending 500 only. तो ये इसके जैसा है. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ डेटास ले लेते हैं. 7, 10, 10, 20, 20. So we have a 7 out here. 10, 10. Then we have a 20, 20, 20, 20. We have a 15, and we have a 8. Bachcha, you are supposed to draw a histogram between the class interval and the frequency. पहला नजर आपका जाना चाहिए, क्या ये continuous distribution है? Yes, it is a continuous distribution. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 30, 30, 30, continuous. Next, your eyes should go, is the class width uniform? यहां देखो मोटू है 20, यहां 10, 10 या 10 या 10 या 10 या 30. क्लास विड्थ तो यूनिफॉर्म नहीं है, और आपको एग्जाम में यही वाला ही आएगा. They won't give you class width uniform. So our job now becomes to do what? We have to adjust the frequency. So we'll do it by the baby way the book has done. So I will need something which is called adjusted frequency. And once I adjust the frequency, now my graph will be between this and this and not between this. समझ में आया? अच्छा सर, तो आपने बीच में क्यों बनाया? बीच में बनाने की जरूरत नहीं है. आपको स्पून फीडिंग करना है तो एक दिखा देते हैं, इसमें वेट ले लें. एक बार किताब खोल के प्रॉब्लम को देख देख के करने से ना आप सीखोगे नहीं. यहाँ पे नजर रखिए, किताब घर पे, जो कि पिछले क्लास से पैरेललोग्राम एक्सरसाइज खत्म हो, क्वाड्रिलेटरल खत्म हो गया. बहुत अच्छा, बहुत पढ़ रहा है भाई. आइए, इसमें विड्थ कितना है? 20. इसका विड्थ कितना है? 10. इसका विड्थ है 10. इसका विड्थ है 10. इसका विड्थ है 10. इसका विड्थ है 10. इसका विड्थ कितना है? 30.
इसका मतलब देयर आर टू क्लासेस विच आर ब्लोटेड, उन क्लासों को हमें बराबर करना पड़ेगा. Now the question arises, they will use some formula and then they will try to convert everything. आप सीधा ये सोचो, I will try to convert everything in 10 how much I got. These are all in 10, 10, 10s. You apply common sense. What is the reading for 20? 7. So for 10 the reading should be how much? 3.5. And the book will be 3.5. So how they do this? 7 was the observation that I got over a spread of 20. Now that means this is the distribution for 1. 20 pens cost 7 rupees. 1 pen cost 7 by 20. So 10 pens will cost this. How much? ये हुआ किताब कैसे सिखा रहा है, मैं तो आपको बोल रहा हूं आप अपना दिमाग लगा लो जस्ट. ये वाला कितना आ जाएगा? 10 ही रहेगा. ये वाला कितना है? 10. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. हाँ, ये कितना रहेगा? 20. ये भी कितना रहेगा? 20. ये कितना रहेगा? 15. This is what you need to consider. These are just the width. Therefore, I always say don't plot this column. This column will confuse you. अब इसमें देखो. This is reported for 30. You want it for 10. For 30, he is reporting 8. So for 10, he should report 8 by 3. 8 by 3 is roughly how much? 3 2s are 6. 2 20. 20 हो जाने से 3 6 are 18. 3 6 are 18. 2.66 बार. मतलब 2.67 ले सकते हैं. और रफली आप यहाँ पे भी स्ट्रेट अवे इसको 2.7 जैसा ले सकते हो, क्योंकि आपको तो प्लॉट करना पड़ेगा. 2.66 you can't plot. Have you now understood? Just plot it. खत्म. Now how will we plot it? क्या हो गया? मच्छर काट लिया क्या आपको? इतना मुंह कैसे? अच्छा, पाँव में दर्द हो रहा है? तो वहां पे एक बिन बैग है उस रूम में, लाके रख सकते हो. No, all fracture student only has brought that, and that too from your school only. हाँ, तो all leg break-ins are coming from one school. That is your school. उसी का है वो. 0 to how much? 20. थोड़ा ऐसा आएगा. नेक्स्ट वाला कितना है? 30. छोटा होएगा. 30 से 40. 40 से 50. 50 से 60. 60 से 70 और उसके बाद 100. ये भी मोटू आएगा. ठीक. We'll be plotting for what, children? We will plot for, this is 3.5. So let's say this is 3.5. Okay. Next one is how much? 10. 10 is almost 3 times of it. 10. उसके बाद भी 10. उसके बाद कितना है? 20, which is double of this. Very easy. उसके बाद कितना है? 20. उसके बाद कितना है? 15. 20 और 10 के बीच में आएगा 15. और उसके बाद 2.7, इससे छोटा होगा. बस किशोर काम होगा. मिल गया 5 मार्क्स. यही काम करना है आपको. और फिर इसका बोल दिया आपको ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. सो व्हाट डू यू डू इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन? यू हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट्स. 0 to 20 का मिड पॉइंट क्या होगा? बोलो बेटा. 10 इसका मिड पॉइंट होगा. सो एग्जैक्टली यू विल फाइंड 1 dot here, then 1 dot here, 1 dot here, 1 dot here, 1 dot here, dot here and dot here. And obviously in your book it is like this, so you can just put 1 dot here. Here also at 5 you will do, because the original distribution is based on 10. So 10, 0 to minus 10, minus 5. And here it will go to 100 and 5. बस हो गया. हाँ, ये आप लोगों ने किया था ना लास्ट टाइम. हाँ देखो, तो यही है और कुछ नहीं है. ये तो एक दिन का चैप्टर हो गया. अब प्रैक्टिस करो बैठ के बस. See, go to the exercise. Just go to the exercise. If you see one problem, the length of 40 leaves of a plant है क्या कोई? Length of 40 leaves of a plant. Four question है ना? 118 to 126. इसमें थोड़ा मेहनत है आपको. This is discontinuous. Draw a histogram. तो बोल ही दिया देखो. First make the class intervals continuous. Is there any other suitable graphical representation? Is it correct to conclude that maximum leaves are 153
Maximum leaves are 153 meter long. Yes, because the highest frequency has been reported for that class only. ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और क्या. I have nothing to do. Practice your graphs and do.